Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course especially for the students from 9 to 12. And in today's lecture we will discuss about the chapter that is diversity in the living organisms, and this is chapter number 9 for class 9, and this is our part number 2 regarding this chapter. And regarding this chapter today we will discuss important 10 questions in our in our part number 2, and the lesson is 9. Now let us start with our first question from this chapter, and the first question is, in which the reproductive organs are hidden? In which the reproductive organs are hidden? Options are cryptogam, B phanerogam, C gymnosperms, and D is angiosperms. So there are 4 options for the question number 1, and the question is in which the reproductive organs are hidden. Options दिए गए आपके पास है cryptogams, phanerogams, gymnosperms, and the last one is angiosperms, and it is the question number 1. तो जिसमें reproductive organs होते हैं वो hidden होते हैं वो आपके कौन है? cryptogam. Cryptogam. So here cryptogam is in which the reproductive organs are hidden. Phanerogams में reproductive organs hidden नहीं होते हैं, gymnosperms में भी hidden नहीं होते हैं, and even angiosperms में भी reproductive organs जो होते हैं वो hidden नहीं होते हैं, पर जिनमें reproductive organs hidden होते हैं वो आपके हैं cryptogams. So here this is the right answer for the question number 1. Next is your question number 2, and your question number 2 is which phylum of animals is also called as flatworms? Which phylum of the animals is also called as flatworms? Options are Porifera, B Coelenterata, C Platyhelminthes, and D is Nematoda. So out of these phylums, which is the phylum of animals that is also called as flatworms? And it is your question number 2. तो जो phylum है हमारा animals का जिसको हम flatworms भी बोलते हैं वो आपका क्या है? Platyhelminthes. Platyhelminthes. So here Platyhelminthes is the phylum of animals that is also called as flatworms. Porifera जो है वो phylum नहीं animals का जिसको हम flatworms बोलते हैं. Coelenterata भी आपका ऐसा phylum नहीं है animals का जिसको कि हम flatworms बोलते हैं. Even Nematoda is not the phylum of the animals that is called as the flatworms, but only Platyhelminthes is the phylum of the animals that is known as flatworm. So here this is the right answer for the question number 2. Next is your question number 3, and your question number 3 is what is the exclusive marine phylum? What is the exclusive marine phylum? Options are Echinodermata, B Porifera, C Cynadrians, and the last one is Protozoa. So you have to find out the exclusive marine phylum. You have to find out the exclusive marine phylum. So Porifera, Cynadrians as well as Protozoa, these are not the exclusive marine phylums, but only Echinodermata is the exclusive marine phylum. So here this is the right answer, that is your Echinodermata. Next is your question number 4, and your question number 4 is the mode of nutrition in fungi is. The mode of nutrition in fungi is, option A is only saprotropic, B saprotropic or parasitic, C only parasitic, and D is none of the above. So here you have to find out the mode of nutrition
in fungi either only saprotropic, B saprotropic or parasitic, only parasitic या फिर none of these। इसमें आप फाइंड आउट करिए बेटे जल्दी से कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंजाई का वो क्या रहेगा, कौन सा ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसकी हेल्प से फंजाई जो है वो अपने न्यूट्रिशन के मोड को जो है वो कंप्लीट करता है। या तो वो टोटली सेप्रोट्रॉपिक है, या फिर सेप्रोट्रॉपिक या वो पैरासिटिक है, या फिर वो सिर्फ पैरासिटिक ही है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंजाई के केस में वो आपका क्या है, वो सेप्रोट्रॉपिक या फिर पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉपिक है पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक। So here the mode of nutrition in fungi is saprotropic or parasitic. So this is the accurate way of the mode of nutrition. Next is your question number 5, and your question number 5 is what is not possessed by the bacteria? What is not possessed by the bacteria? Option is membrane bound organelles, B nucleus, C nucleolus, and D is all of these. तो यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन है जो कि पोजेस नहीं होता है बाय द बैक्टीरिया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि पोजेस नहीं होती है बाय द बैक्टीरिया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, या फिर ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन है जो कि पोजेस्ड नहीं किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा? तो जो बैक्टीरिया के द्वारा पोजेस नहीं किया जाता है वो आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है जिनको हम पोजेस नहीं कर सकते हैं बाय द बैक्टीरिया। न्यूक्लियस भी है आपका, ये भी पोजेस नहीं होता है बाय द बैक्टीरिया, एंड इवन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। These are the various types of the bacteria that are these are various types that are not possessed by the bacteria. So here all of these is the right answer for the question number 5. Next is the question number 6, and your question number 6 is what does arthropod mean? Arthropod का क्या मतलब है? बोनस लेग्स है, कार्टिलेजिनस लेग्स, लार्जेस्ट लेग्स, या फिर ज्वाइंटेड लेग्स। सो इनमें से व्हाट डज आर्थ्रोपोड मीन? आर्थ्रोपोड का क्या मतलब है? बोनस लेग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस लेग्स होती हैं, लार्जेस्ट लेग्स होती हैं, या फिर ज्वाइंटेड लेग्स होती है। तो जब से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा आर्थ्रोपोड का, या जिसका हम ये कह सकते हैं आर्थ्रोपोड का क्या मतलब होता है? आर्थ्रोपोड का मतलब है कि all these have jointed legs, jointed legs. So this is the mean of the arthropod, that they have jointed legs. So this is the right answer. Next is your question number 7, and your question number 7 is what is not poisoning among these? What is not poisoning among these? Option A scorpion, B centipede, C spider, and D is crab. तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जो पॉइजनिंग नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, स्कॉर्पियन है, सेंटिपीड है, स्पाइडर है, या फिर क्रैब है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट इज नॉट पॉइजनिंग अमंग दीज? इनमें से जो पॉइजनिंग है, स्कॉर्पियन जो होता है ये भी पॉइजनिंग है, सेंटिपीड जो होता है ये भी पॉइजनिंग होता है, स्पाइडर भी है, और जो इनमें पॉइजनिंग नहीं है दैट इज क्रैब। Crab is not poisoning among these. So here this is the right answer. Next is the question number 8, and your question number 8 is the excretory system in annelids. The excretory system in annelids is consisted of tubes, and these tubes are called as option A is flame cells, B metanephridia, C nephridia, and D is protonephridia. So here the excretory system in annelids is consisted of tubes, and these tubes are called as either flame cells, metanephridia, nephridia, या फिर protonephridia, and it is a question number 8. तो जो excretory system है हमारा annelids का, जो कि consist करता है tubes को, these tubes are called as nephridia. These tubes are called as nephridia. So here this is the right answer, that is the nephridia, and it is your question number 8.
Next is your question number 9, and your question number 9 is which subgroups in plant kingdoms produced flowers? इनमें से कौन सा ऐसा सबग्रुप है प्लांट किंगडम का that produces the flowers? Options are angiosperms, B fungi, C mosses and D is ferns. तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सबग्रुप है हमारा प्लांट किंगडम का जो कि स्पेशली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स को. एंजियोस्पर्म्स है, फंजाई है, मॉसेस है या फिर फर्न्स है. इनमें से कोई एक ऐसा हमारा सबग्रुप है प्लांट किंगडम का जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है. तो जो हमारा सबग्रुप प्लांट किंगडम का है दैट प्रोड्यूसेस द फ्लावर्स इज एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म्स. So here angiosperms is the right answer, and this is the subgroup in the plant kingdom that produces the flowers. Now it is our last question for our today's lecture, that is the question number 10, and your question number 10 is choose the vascular plants out of these. Vascular plants out of these. Options are mosses, B liverworts, C hornworts and D is ferns. So you have to choose the vascular plant out of these. Mosses is not the vascular plant out of these. Liverwort is not again a vascular plant. Hornworts are not the vascular plants, but ferns. Ferns are the vascular plants. Vascular plants. So here we complete important 10 questions regarding the chapter that is the diversity in the living organisms, and this is our part number 2 from this chapter. So here we complete important 10 questions. So once again good night to all the students.